Now for the big spotlight viral image of the day. It happened earlier this morning with an emotional moment where the Prime Minister broke down in tears in Parliament. A day of emotional speeches ensued in the Rajya Sabha as MPs bid farewell to Leader of the Opposition Ghulam Nabi Azad. The Prime Minister broke down, had tears in his eyes as he remembered how Ghulam Nabi Azad had broken down as well while informing Modi, then the Gujarat Chief Minister, of a terror attack on Gujarati pilgrims. Here's the story. सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, The Prime Minister breaking down in tears in Parliament on Tuesday. While bidding his friend, fellow MP and political rival Ghulam Nabi Azad a fond farewell. The touching moment across party lines reverberating across an acrimonious and hostile political landscape. Clearly moved by the gesture, the Congress stalwart returned the affection. सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना, आपने इतना समय 2 घंटे से ज्यादा यहां समय दिया, जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूंगा। उस रात को The mutual respect wasn't spontaneous, but goes back a full 14 years, as the Prime Minister said. Way back to 2007, when Azad, then the Chief Minister of Jammu and Kashmir, had personally connected with his Gujarat counterpart at the time to share the news of a horrific terror attack on Gujarati pilgrims. The mutual affection has built up over the years, with Modi articulating his fondness for Azad more than once. First in his interview to actor Akshay Kumar. और गुलाम नबी आजाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मार रहे हो? तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है। शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। Then in his speech yesterday in the Rajya Sabha, आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था। वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना, ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं, उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। 28 साल कार्यकाल and finally today, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। Modi's tearful moment has amplified cordiality and statesmanship despite a vicious political atmosphere. But it has also served to severely embarrass the Congress party. Because ever since he led the charge of dissent within the Congress with the famous G23 letter to the Gandhis last year, Azad has been increasingly isolated and pretty much an outcast. Modi's embrace today therefore serves to highlight the Congress's intolerance of internal dissent, carrying forward a narrative the Prime Minister had thundered out in Parliament back in 2018. पहले सहयोग की रस्सी फेंको और फिर धोखे से उसे वापस खींचो। क्या देवगौड़ा जी हो, क्या मुलायम सिंह यादव हो, कौन भूल सकता है कांग्रेस ने
ने इन लोगों के साथ क्या किया। पद, सत्ता। The political point made, with the Prime Minister's tearful words today still being digested by a parliament that has had its daggers drawn for months. But Modi's emotions have been on display before, from speaking of Advani to his own mother to the surgical strikes. Modi has let his tears do the talking. But will his emotions now bridge a yawning divide in politics, or only serve to widen them? Bureau Report, India Today. Well, a very emotional day for Ghulam Nabi Azad, that really pretty much an outcast in the Congress party, but having this very public honouring by, well, the Prime Minister, but also the leader of the opposition, the rival party to the Congress, in such a public, emotional way, showing him affection, is bound to have caused some embarrassment within the Congress party. India Today's Mosmi Singh spoke exclusively to Ghulam Nabi Azad. Here's what he said after a very emotional few hours in Parliament. मैं नहीं अपेक्षा करता था कि प्रधानमंत्री इतना सेंटिमेंटल हो जाएंगे, इतना इमोशनल हो जाएंगे, इतना भावुक हो जाएंगे। पुरानी यादें जब हम चीफ मिनिस्टर थे या गुजरात के लोगों पे जब ग्रेनेड फेंका गया था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, और किस तरह से मैंने उस वक़्त अपने आप रोना आ गया था जब उन बच्चों के जिनके बच्चे ग्रेनेड की वजह से मारे गए थे, वो मेरी टांगों में लिपट गए थे तकरीबन 1 दर्जे, और कह रहे थे कि हमारे पापा कहाँ हैं, आप चीफ मिनिस्टर, आप बताओ हमारे पापा कहाँ। तो मेरे बेसाख्ता आंसू ही नहीं बल्कि आवाज़ें, चीखें निकल गई कि बच्चों में तुम्हारा बाप कहाँ से ला पाऊँगा, तुम्हारी माँ कहाँ से ले पाऊँगा। तो वही याद, और उसी रोते रोते मैं सीएम महाराष्ट्र से, सीएम गुजरात मोदी साहब थे, उनसे बात कर रहा था, तो उनको वो ध्यान भी, वो दिन याद आ गया। पर आपको जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी उस वाक्य का जिक्र किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री रोने भी लगे, मतलब मिनिस्टर भावुक हो गया, और मैं जब बोलने लगा तो मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि मुझे वो दृश्य, वो याद उस वक्त आई। मुझे लगा ऐसा कि जैसे वो बच्चे अभी मेरी टांगें पकड़ के बैठे हैं कि हमारा बाप वापस कर दो, हमारी माँ वापस कर दो। तो एक माहौल जो था बिल्कुल बड़ा गम वाला माहौल बन गया था, अफसोस वाला माहौल बन गया था। और यही नहीं, मतलब प्रधानमंत्री ने एक और वाकया बताया जब आप बातचीत कर रहे थे उनसे सदन के भीतर ही, संसद के भीतर ही, और उन्होंने ये बताया कि हम लोग की, मतलब कि मीडिया के लोग सोच रहे थे कि ये लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का क्या मेल, इस तरह का जिक्र किया उन्होंने। वो वाकया याद है? देखिए, बहुत राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है, बदलाव भी आया है और गिरावट भी आई है। आज राजनीति में लगता है कि आप विपक्ष का आदमी अगर सरकार के किसी व्यक्ति से बात करे, या सरकार का व्यक्ति या लीडर किसी विपक्ष के नेता से बात करेगा, वो ये लगता है कि ये मिले हुए हैं, कुछ बात करें। लेकिन ऐसा नहीं। आज से 30 साल 40 साल पहले तो इकट्ठे विपक्ष के लोग जब सदन में जो बोलते हैं, हम लोग वो आदमी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम एक दूसरे के, हम उसकी विचारधारा के भी खिलाफ बोलते हैं, हम उसकी पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं। तो जाहिर है जो उस पीढ़ी के, उस उम्र के जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में वो अच्छा को अच्छा कहते हैं और बुरा को बुरा कहते हैं। I want to take you back 14 years now to 2007 when that terror attack happened on Gujarati pilgrims, which is when then Chief Minister of J&K, Ghulam Nabi Azad, had dialed then Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, to break the news to him about the tragic killing of those pilgrims. बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। Today's Ashraf Wani for more on this. Ashraf, you reported on this terror attack. You were there when Ghulam Nabi Azad broke down in this manner back in 2007, and now these images
have once again been invoked by the Prime Minister when he himself became emotional in Parliament today. You know, you were there as well, Ashraf. What was it like, and did you think that 14 years later, these images would once again become front and center in politics in India? Absolutely, Shiv. Basically, this was not 2007, it was 2006. I'm right, and in fact, I am right. It was the month of May when the Chief Minister then in the Jammu and Kashmir, Ghulam Nabi Azad, was moving up and bringing a lot of progress in the Jammu and Kashmir, and was working hardly day and night for the progress of Jammu and Kashmir. And also his one motive was to boost the tourism. He was himself, because we have keenly seen how he was working as the Chief Minister of Jammu and Kashmir state. It was a challenge for him, and he was in a coalition government with the Mehbooba Mufti. Then that government was running, and it was 25th of May when 2 grenade attacks took place on the tourist buses, which is not usually happening in the terrorism in the Kashmir Valley. But on that day, 2 buses were targeted by the grenades within the span of 1 hour, in which 38 tourists got injured, most of them from the Gujarat, because Gujaratis visit mostly to the Kashmir Valley and always are the tourists to the Jammu and Kashmir. And in that period, 4 of them lost their lives in that grenade attack. And then Chief Minister Ghulam Nabi Azad not only went to all those tourists who were affected, but in fact I saw him going to the civil airport in the technical airport, the army airport, and those bodies were dispatched to their native places in a special plane. It's incredible. With a few emotional words in Parliament, breaking down himself, the Prime Minister has in many ways sent ripples across the political sort of battlefield. It has become vitiated and hostile and aggressive between the government and the opposition. Will this widen the gap, or will this bridge the divide and remind everyone about the relationships that exist across party lines as well? A beautiful moment captured, and we'll tell you much more about it in the hours ahead right here on India Today. Ashraf, thank you very much for that. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.